कहाँ रहे आप? Where have you been? Sir, I am very busy working, sir. I have been, यहाँ I am मतलब अभी हैं, जबकि आप पीछे की बात नहीं कर रहे हैं, तो बोले I have been very busy. I I am been very busy, sir. I have been very busy. I, I have been very Evening, sir. busy, sir. Yeah. Okay. Hey, Kakasha. Hey, Nishat. So, Good evening, sir. Kakasha, do you still have a fever, Kakasha? Yes, sir. Kakasha said she had a fever. आवाज नहीं आ रही सर। हाँ बेटा, अभी आ रही है. I can hear you now. Do you still have a fever, Kakasha? Yes, sir. Oh, Good evening, sir. good evening, Sanyogita ma'am. How are you doing? I am in Jamshedpur, sir. You are in Jamshedpur. You're Mackay. Yes, yes, Oh, sir. I see. That's lovely. Are you enjoying your time? Yes, sir. Oh, of course. So I mean, last 3 days we couldn't have the class and it was really boring for me. 2 days or 3 days? When was our last class? Two days before, sir. Okay, 2 days. yeah. 2 days before. Our last Yesterday class, and our is last on class was Wednesday. on No, the 6th. Thursday. Network Tuesday. issue, Tuesday, Tuesday. Wednesday, and Yes. Thursday we couldn't meet. We are here on Friday. Yes. Yes, All sir. right. Hey, Kalpana, how are you doing, Kalpana? I'm good, sir. Thank you. Yeah. What about you? Like I said, I missed my class so much. You have missed this class, Yeah. but I didn't miss, sir. Oh. Sir. I'm sorry, sir. I enjoyed. Okay, you enjoyed yourself. Okay, don't Yeah. ever say I enjoyed and that's all. No. In English, there Uh-huh. are some verbs which must take an object. कुछ ऐसे verbs होते हैं जिनके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर होगा. ओके, अगर नहीं है तो नहीं करेक्ट है वो. जैसे आई लाइक, कभी नहीं बोल सकते आई लाइक सिर्फ. उसके बाद कुछ ना कुछ जरूर होगा. लाइक के बाद एक ऑब्जेक्ट होगा. ओके, बिकॉज कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में जो बिना ऑब्जेक्ट के नहीं यूज हो सकते. That means I enjoyed myself or I enjoyed holiday. Yeah, some object. Okay. Hello, Zeba. Back in your traditional appearance, Salwar Sameej. That day you surprised me in the t-shirt. I was At like, who is Bokaro, this? sir. Yeah, you're in Bokaro now. Yes, sir. And that day, where were you when you were wearing the t-shirt? Ranchi. Oh, I see. Okay. So when you are at home, then you are always dressed, traditionally. No, sir. Is there a I wear yeah, go on. t-shirt always. You often wear a t-shirt. Yes. Okay. Jeba. Nice. Jeba. Yes, Jeba, ma'am. are you listening me? I am in Jamshedpur. Wow. Are you guys very far from each other? How far? No, Bokaro. sir. Yeah, go on. My law house is in Jamshedpur. Half hour. Oh, I Half hour. see. Okay, Half that's hour why from my house, sir. From okay. my home. Yes, sir. All right. Half hour. Interesting. Hey, Sir, it's Afraid. hour or hour? Okay, that's a good question, Kalpana. Let me tell you everybody. There are some words which are tricky to pronounce. Okay. OUR is one of those words. Okay. There are some words. I will never ask you guys to sweat
over these things. मैं कभी नहीं कहूंगा कि आपको बहुत परेशान होना चाहिए. Okay? आप इंडियन Yes. हैं, आप इंडियन बन के इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश करेक्ट बोलिए, स्मूथ बोलिए, but it doesn't matter if you have Indianness in your pronunciation. Okay? इसको जो गलत बोलते हैं उनकी पर्सपेक्टिव गलत है. Okay? तो अगर कोई बाय द वे फ्लावर बोलता है जो कि इंडियन प्रोनाउंसिएशन है, तो मैं कहूंगा ये एकदम ओके है अगर आप इंडियन से बातें कर रहे हैं तो. बट यस, इट इज ट्रू कि ये वर्ड्स ट्रिकी है प्रोनाउंस करने के लिए, और इनके दो प्रोनाउंसिएशंस होते हैं कल्पना. देयर आर टू प्रोनाउंसिएशंस, वन फ्लावर आर, ओके, Flower. और एक और प्रोनाउंसिएशन है फ्लावर एंड आवर. ओके, उसी को हम लोग आवर बोल देते हैं, ठीक है, फ्लावर बोल देते हैं. Yes. तो दैट्स ओके, चलता है, यू नो, एज लॉन्ग एज यू आर टॉकिंग टू इंडियंस यू आर फाइन, कोई परेशानी नहीं है. राइट? Hmm. Yes. Hey, Kushi, good to see you in the class. Yes, And sir. yeah, so we were just talking about the pronunciation of certain words. तो मैं कभी नहीं कहूँगा इसको priority दो. No, you can improve your pronunciation as you move along, you know, because let me tell you, you don't need to sweat over your pronunciation. आपको पसीना नहीं बहाना है, परेशान नहीं होना है. Sweat over something, मतलब परेशान होना, okay? Sweat over something. You don't need to sweat over your poor pronunciation. Your poor pronunciation will become good pronunciation if you keep listening to correct pronunciation. There was a time in my early, teenage when I spoke English like a Bihari, very, very heavy accent, okay, and poor pronunciation. And I thought I was very confident about my pronunciation, okay? I thought I was always right. And when my cousins corrected me, told me I was wrong, I didn't even believe them. I still remember a story, a situation. I was on the auto, and I was talking to my, cousin in English, and I said something like, want, I want. No, bhat, bhat, bhat. I used to say bhat, okay? So my cousin told me to pronounce what, not bhat. And I was confused. I said, why what? W-H-A-T, bhat. It was granted, W-H-A-T, bhat. So, he laughed at me. I still remember that day. And today, I think I have better pronunciation and accent than him. So the thing is, I spent a lot of my time listening to correct pronunciation. It influenced my own pronunciation, as simple as that. If you go and live in Delhi, you start to speak like Delhi people. You come and live in Bihar, you start to live like Biharis, because you start to speak like Biharis, because the people that you hear, their Yes. pronunciation, their rhythm, their style of speaking impacts you, influences your speaking. So I have a still remember, sir. I still You remember. used No need to- to use have. No need to use Okay, have. I I still still remember, remember. I still remember that you used to scold me for like a what pronunciation and many pronunciation. At that time, I use you have scolded me a lot. Kalpana, Yes, sir. two things I would like to say in response. Okay. Uh-huh. One, you were my student about 10 years ago, or maybe longer, right? No, not same. Yeah, I am your Yep. oldest. Yep. For nearly 10 Mhm. years or maybe more. So in 10 years, I have changed a lot as a teacher. And I will say change in a positive way. I have become a lot more patient. That's what I am saying, sir. You don't scold nowadays, and you used to scold that time. Okay, I'm sorry about that. And young people are not as mature as older people, of course. I'm old. I hope I'm a little mature as well. So I don't know how to respond to that. Yeah, I know I used to get angry in my class more often. And I used to shout at my students sometimes. And some students, got, not a very nice experience with me because of that. You were one No, of sir, them. that was nice, sir. I like that one. Oh, really? Yeah, sir. But I can't go back. I can't be young again. No Chavan Pras there is, which can make me young again. Sorry. You will be disappointed then.
Okay. Jokes apart, Good but evening, I sir. think, hey, Kashif, I must be honest with you. I think I am a lot more comfortable as a teacher, confident as a teacher than I was 10 years ago. Okay, Atif, I hope you have a good reason. Please write why you decided to keep your camera off today, okay? Yeah, so just want to tell you that some people think you become a teacher and that's it. But I think life never stops teaching you. You see, you keep learning. And as a teacher 10 years ago, and today, the teacher I'm a far better teacher than I was 10 years ago in many ways. Okay. It's not just my knowledge of English, it's also about my approach towards teaching, my patience with my students, and everything. So I would say you would get to see that difference, Kalpana, as you spend more time here, you know. I'm And seeing. I also understand which things are more important, where I have to put more emphasis. I just said, don't worry about the pronunciation, people, okay? Have this faith. If you're listening to correct pronunciation, it will definitely influence your own pronunciation. How many of you used to speak Hindi differently when you lived in your hometown, and when you went to live somewhere else, slowly and slowly your style of Hindi speaking also changed? How many of you will say that, yes, my speaking style in Hindi has changed a little bit because I'm not living in my hometown, because I'm living somewhere else? Kalpana, you? I didn't notice, sir. Maybe other one noticed me. Do you think you used to speak Hindi the same way, the way you do now? No, I sir. think. In Bihari language, everything say kitabwa. Yeah, in Hindi, sir. Yes, yes. Yes, no, sir. Yeah, absolutely. I agree totally. That's what I'm asking. Yes, sir. Kashif, do you think your Hindi has changed a little bit because you now don't live in Bihar? The way Yes. you speak Hindi, the way you sound, your rhythm, your music when you speak Hindi? Sir, I was active on a social media. You have suggested there were, and I didn't reveal that I am from Bihar. No one get me that I am from Bihar. I never speak in Hindi. I use only English. They think that I am from South Indian, but I didn't have the tone like a South Indian. South Indian accent. Use the word accent instead of the word tone, okay? I didn't have the South Indian accent, yeah. And still they thought you were from South India. Happens, okay? So I'm glad to know, that you have kind of gotten rid of the Bihari accent when you speak. Okay, Kushi, did you live in Haryana now, right, Kurukshetra? Do you think your living there has impacted the way you speak Hindi, or it is still very much the same, the way you used to speak earlier? Sir, it's same It's the same because there isn't much of a because I difference. spent a lot of time in Delhi, so Okay, that was okay. different. I see. So yeah, this is what I'm saying to all of you, okay? Anyone who wants to speak better English, he wants to or she wants to improve their accent, spend time with the audio. It will help you in so many ways. Okay. I don't have new advice to give to you guys because I have shared the most important thing. Listening, it improves your pronunciation, it improves your grammar, it improves your vocabulary, it improves your accuracy, overall accuracy in English, and it can make you feel more fluent as well when you speak. Okay, because the words will automatically come, to you. You won't have to go searching, for the words when you keep listening. Okay, listening helps you bring your passive vocabulary to the active vocabulary stock. It means the words that you know, but you don't use. But if you keep listening to them, some of those passive vocabulary items will become your active vocabulary items. It means you'll start using them. Okay. Today, we are going to talk about two words, can and could. We all know the words can and could, right? Yes. Can and could both express ability. I can speak English, I can speak some Spanish, but I cannot speak Spanish fluently. So can talks about your ability. We know that, we have studied that. Could is the past form of can. When you talk about ability, but in the past time, Kushi, if you remember one thing, that a sentence is either about the present or about the past or about the future.
So if you are talking sir. about the past time, if you want to say कि बचपन में मुझे English बोलना नहीं आता था, it means you are again talking about ability, but the absence of ability. You are saying, I couldn't speak, English when I was a child, and I can't speak Spanish fluently. So can't refers to the present, couldn't refers to the past. But I'm going to teach you something which is beyond this. It's not about can and present and past. Take a look at this here, everyone. Look at these 4 pictures and read these conversations here. And I'm going to play an audio file you will listen to. Shabnam 5.70. Tape script 5.17. Polite requests. 1. Can I have a coffee, please? Yes, of course. 2. Can you open the door for me, please? Sure, no problem. Thanks. 3. Could I have the menu, please? Certainly, madam. 4. Could you tell me the time, please? It's 10:30. Thanks a lot. So Shabnam has just arrived. Shabnam, you're here? Sir, I can't understand 4 numbers, sir. Could you time, please? Tell me the time, please. This woman wants to know the time. She doesn't have a watch. Tell So she me. asked this man, could you tell me the time, please? Shabnam, are you here? Okay, she isn't. So, guys, you can see in these 4 pictures, A, in every conversation, is making a request, right? In this conversation, the first picture, it's a cafe, and this pretty girl is the Batista. A Batista is someone who serves coffee, runs a cafe, Batista. And here is the customer. We can see the side profile from behind, of the customer. Okay, so who starts the conversation here? Who is A in this conversation? The girl, the Batista, or the customer, the boy? The customer. The customer. And what does the customer want? Coffee. He wants a coffee, right? So what does he say? What does he say? Can I have a coffee, please? Can I have a coffee, please? Okay. Can I have a coffee, please? That's perfect. Can I have a coffee, please? So Hello, tell good me, evening, sir. hey, Shabnam, Oh, yes, sir. how are you doing, Shabnam? So fine, sir. Shabnam, very quickly, I'll give you two sentences. I cannot speak Spanish, fluently. I cannot speak Spanish fluently. All right? You understand this sentence? Yeah. This sentence Yes, refers sir. to the past or the present? Cannot बोल सकता हूँ. No. Present. I cannot speak Spanish fluently. Hello, Sunita. So this is present. This is Present about tense. present, right? And I cannot speak Yes, sir. Spanish fluently. When I was a child, I couldn't speak any English. When I was a child, I couldn't speak any English. Now, this sentence refers to the past. So everybody knows Yes, could is the past of can, right? So when you want to talk about abilities in the present, you use can. But when you want to talk about abilities in the past, you use could. So tell me, when you were a child, 5 or 6 years old, could you sleep alone? Or did No, you? sir. Yeah. When you were 5 or 6 years old, could you sleep alone? No. No. Okay. Could you speak English when you were a young child, 6 or 7? No, sir. Okay. So this could you bathe yourself? Could you have a bath on your own when you were young? Like 6 or 7? I think you could, right? Yeah, sir. Yeah. All right. So could talks about abilities in the past.
But today we are going to learn another use of can and could, and it is not about ability. When this customer says, "Can I have a coffee, please?" He's not talking about his ability. वो ये नहीं कह रहा है कि मेरे में ability है कि नहीं. He is simply making a polite request. He is simply asking for a coffee. Politely वो coffee मांग रहा है. कैसे मांगता है? "Can I have a coffee, please?" So look at this can here, okay? And the Batista says, "Yes, of course." Now look at the second conversation. This picture is outside a hospital. There is a man. He seems to have some injuries to his right leg, and he is using crutches, right? He's using crutches. Okay, I can hear some noises coming, so please make sure that your mic is muted if you are in noisy surroundings, okay? So this man, he seems to have some injuries here. Look, his leg is injured here, right leg. And he's using crutches. So he can't open the door. So he asked this girl, what does he say? Can you open the door Can you for open me, the door please? for me, please? Now, he could have said, "Open the door," but that would sound rude, no? He wants to sound polite. So he says, "Can you open the door for me, please?" So when he says, "Can you open," is he saying, "तुम्हें क्षमता है कि नहीं दरवाजा खोलने की?" Is this the question? Sir. No, not at all. It is a polite request. Is there a दरवाजा खोल दो ना? Can you open the door for me, please? Okay. Then the girl says, "Sure, no problem." And then he thanks her. "Oh, thank you." Now come to the third picture. You see, this is a restaurant. And here this woman, she wants the menu. So she raises her hand and says, "Excuse me, could I have the menu, please? Could I have the menu, please?" So she wants the menu, just like this man in the first picture wants a coffee. Similarly, she wants the menu, right? So I he said, hear could is used, sir. that's what I'm trying to explain, ma'am. That's what I'm trying to explain. That this customer said, "Can I have a coffee, please?" And this woman says, "Could I have the menu, please?" So what do you learn from these two sentences? That when you are making a polite request, you have two options. You can use can, you can also use could. You can say, "Can I have a coffee, please?" You can also say, "Could I have the coffee, please?" Okay? Right? Now take a look here. Number 2, the man said, "Can you open Sir, the..." Yes, yes. but you have told that, yeah, I know that, but you have told that ki could refer for past. Exactly. That was the first use. We already learned that. Okay. Now we are going one step further and we are learning something that is not very common. Okay. People only think could is the past of can, and they often confuse sentences like this. Okay. But today you're learning that could can be used to make a polite request. "Could I have the menu, please?" She could have simply shouted, "Give me the menu." But that would not be very polite, right? She said, "Could I have the menu, please?" Now look at this woman here in the fourth picture. This woman doesn't have a watch, okay? She wants to know the time. So she asked this, gentleman, she says, "Could you tell me the time, please?" And here this man says, "Can you open the door for me, please?" So what do you realize? That when we want to make a polite request, we can use can you, could you, can I, could I, doesn't matter. Okay. In this situation, in this context, could is not the past of can. Right, everybody? Yes. Could is not the past of can. It is the same as can. Now, there is a small difference, a very, very small difference. When you want to show more respect, when you are in a formal situation, then instead of can, people prefer could. People prefer could instead of can when they're in a formal situation. For example, you are in your principal's office or something maybe, and you want to make a request, then it's better to use could than can. All right. For example, okay. It is important that I tell you, we are not talking about permission here. We are talking about polite request.
Okay, in some situations you guys need the permission. So permission के लिए we use may. All right, may I sit down, may I come in. So that is for permission. Okay, और ये क्या है? Polite request. That's Sir, yes. me permission. I'm going to off my camera. I You have. can use. Okay, Sunita, you want to turn off your camera? Yes. Well, you are not on camera anyway. I could only see the, the ceiling fan. So it doesn't really matter. Okay, so I was Master, just, Sunita can say that, could I turn my camera off? yeah. In this situation, she could have said, "Sir, could I turn my camera off?" Okay. However, I just want to tell you, okay, remember, in a formal situation, if you want permission, then use may. For example, you're standing outside your principal's office and you want the permission to go inside the office, then what will you say? Yes. May I come in? come in, sir? May I come in? But if you want to enter your bhabhi's room, okay? आप अपने भाभी के कमरे में जाना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे? May I come in, भाभी? May I come in? भाभी से बोलेंगे May I come in, भाभी? I don't think so. It will sound very strange. Okay, it will sound very strange. आप कुछ लड़के कह रहे होंगे सर पूछने की क्या जरूरत है, ऐसे ही चले जाएंगे अंदर. But no, that's not right. Okay, you take permission. Okay, you don't want to, you don't want to invade her privacy. Just like entering without permission. So you ask her politely, "Can I come in, bhabhi?" Right? Can I come in? That sounds informal. That sounds polite. And तो तीनों चीज समझ जाइए. Can. We can use as well could there. हाँ, of course. But मैंने फिर से बताया है, you can use could, Kalpana. But remember, could. Actually, sir, I was really confused. Can or could. Yeah, I know. That's why I said, this is the second lesson. I talked about can and could for ability first, so that everybody can refresh their memory of what they already know. Everybody knows the use of can and could for ability, right? That I can cook very well, or when I was a child, I could not cook, things like this. So can and could, everybody knows about ability. A polite request में could is used the same way as can. The only thing is, in formal situations, very, very formal situations, could is preferred over can. आप एक अजनबी से मिले और आपने उनसे कहा कि जरा समय बताइएगा, तो you have two options. You can say, "Can you tell me the time, please?" You can also say, "Could you tell me the time, please?" अब आपकी चॉइस है. अगर आप वो मेंटेन करना चाहते हैं कि वो अजनबी है, थोड़ा ज्यादा पोलाइट साउंड करे, थोड़ा रिस्पेक्टफुली साउंड बात करे, तो you would go with could. ऐसा नहीं can shows disrespect, could shows more respect. Okay, so formal situation में we prefer could you instead of can you. Right. Now अगर आपने किसी से कहना अपना WhatsApp नंबर दीजिएगा जरा, okay, तो आप दोनों तो ऐसे बोल सकते हैं, "Can you give me your WhatsApp number?" or "Could you give me your WhatsApp number?" Could Now, you depends. share my WhatsApp number? हाँ, depends. Okay, यहाँ depend किस बात पे करता है? If that person is a informal relationship, then you can go with can, no problems. But if that person is like a colleague, जिसके साथ आपकी दोस्ताना व्यवहार नहीं है, थोड़ी बात, तो could you is better, But again, it's not a very hard and fast rule. I just want to tell you, ये सब चीजें महसूस करिए. मेरी बात सुन के रूल मत बना लो कि सर ने कहा है. पहले मैं क्यों बोल रहा हूँ वो समझना है. आप बताओ, जब आप किसी अजनबी से बात करते हो तो आपका टोन वैसा रहता है जैसे दोस्त के साथ बात करते हैं, या डिफरेंट होता है? Different. तो it's not just the use of can and could. Tone changes as well. I'll show you what I mean. जब आप can बोलते हो तो आपका टोन थोड़ा कैजुअल होता है. When you use, your tone sounds different. "Can I have a coffee, please? Could I have the menu, please?" Okay, तो थोड़ा polite, formal हो जाते हैं आप, formal. और ये फॉर्मल कैसे होते हैं आपका, यू कैन इमेजिन, आप हिंदी में कैसे बातें करते हो, योर टोन चेंजेस स्लाइटली. तो एज यू लिसन मोर, यू विल बिकम मोर कंफर्टेबल विद दीज थिंग्स. तो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा आप लोगों को. द ओनली थिंग आई वांट टू टेल यू is can and could are both used to make polite requests. Okay, listen to Tape this script audio. 5.17. Polite requests. 1. Can I have a coffee, please? Yes, of course. 2.
Can you open the door for me, please? Sure, no problem. Thanks. 3. Could I have the menu, please? Certainly, madam. 4. Could you tell me the time, please? It's 10:30. Thanks a lot. Okay, take a look at this first conversation. Can I have a coffee, please? Yes, of course. And here, certainly, madam. Okay, now when you compare this, yes, of course, and certainly, madam, which sounds formal to you? Certainly. Certainly means The same, of course. अचानक. No, but that is suddenly. That is suddenly, okay? Oh yes sir. अच्छा सोचो ना, देखो हम लोग क्या कर जाते हैं, गलती कैसे होती है। अगर हम इसका मतलब अचानक सोचते हैं तो शबनम, क्या इसका सेंस बनेगा? Yes sir. Yes sir. No sir. ये एक बड़ी गलती होती है हम लोगों से। अगर हम कोई मीनिंग मानते हैं, आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस, कि कोई मीनिंग अगर हमारे जहन में आ रही है तो डज इट मेक सेंस? इसी को कहते हैं ऑब्जर्व करना। ओके, कि मान लेते हैं हमें दिमाग में है सर्टेनली मतलब अचानक से, तो अचानक बोलने का यहाँ क्या मतलब होता है? तुरंत बोलने का तो समझ में आता है, लेकिन अचानक बोलना तो नहीं समझ आएगा। तुरंत Certainly means 100%, okay? 100%. I will certainly help you. I will certainly help you. Means I'm going to help you, definitely. Yes, exactly. Go and talk to the police inspector. He will certainly help you, okay? Like this. Oh, do you want to practice the conversations with me? Come on, the first conversation. You are A, I'm B. Go ahead. Okay. All of you. Can I have a coffee, please? 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 Yes, of course. Now, number 2. Can you open the door for me, please? Can you open the door for me, please? Sure, no problem. Thanks. you. Number 3. Thank you. Number 3. Could I have the menu, please? Could I have the menu, please? Certainly, ma'am. Certainly, sir. Next, number 4. Could you tell me the time, please? Could you tell me the time, please? Okay, well done. Yeah, it's 10:30. Thanks a lot. Okay. Thanks a lot. So remember, we can use can or could to make polite requests. Can I ask you a question? Yes, Could I ask you a question? It's the same. You are requesting, you are asking the person. एक सवाल पूछे आपसे, तो अगर आप ऐसे पूछना चाहते हैं किसी से, एक सवाल पूछे आपसे, कैसे बोलेंगे? How will you say that? Can I have a question? Can I ask you something? Yeah. Or could I ask you a question? Can I ask you a question? Ask you question. Okay, formal और informal situation है, वो आप decide करना. Okay? अगर आपको लगे formal है, go with could. लगे formal नहीं है, go with can. Okay. Can you do something for me? Could you do something for me? All right? Yeah, I can. Yeah, Yes, sure. I can बोलने की जगह बोलेंगे sure. ज़्यादा बेहतर Sure. लगेगा. Tell me, Sure, right? yes, sir. Okay. Remember, can and could express ability as well. We have already studied. Can refers to the present, could refers to the past. Okay, take a look at this line here. What does this line show? That we should not say this sentence with a flat tone. We should change our voice a little bit. Can you try and say this sentence following this line? Can I have a coffee, please? Chiku, your surroundings are noisy, okay? Go ahead. Everybody, say this sentence and try to take care of this line. You know, the change in this line. It's not a flat line. So don't speak with a flat tone. Go ahead. Can I have a coffee, please? It sounds better. Yep. Could you Can tell I have me a coffee, the time, please? Can I have a Could you coffee, tell me, please? please? Could you tell me the time, please? When you say the coffee, your voice goes up. When you say the word time, your voice goes up. And then you say, please, okay? Can I have a coffee, please? Could you tell me the time, please?
Okay, this way it sounds more polite in English than, can I have a coffee, please? Could you tell me the time, please? This doesn't sound very polite. When you go in a flat line, when your tone, your intonation is flat, then it sounds rude. You sound angry. So when you want to sound polite, make sure that your voice has modulation. Your voice goes up and down. This way you will sound more friendly, more interested, more polite. Okay, so of course, for a pair talk, you guys can practice the conversations later. Right now, I want you to do this exercise, exercise 4. You have to use can or could, I or you, to complete these requests. Look at these 6 requests, everybody. Complete them in your book. And if you don't have the book, just complete them in your head, or maybe if you want to write on a piece of paper. You have to complete these requests. Can I check now? Are you done? Yes, sir, I have done. Yes. I have done is not correct, is it? What did I teach you to say? I am I'm done. done. I am I done. am done. And I in am this done. sentence, I'm done. Done works as an adjective, okay? Not as a verb. Done is an adjective in this sentence. I'm done means I don't need to continue. I don't need any more time. I'm done, okay? So one sentence is Verb remaining. is to be. Yeah. Yes, Kalpana. The verb is be here. I'm done. Okay. Suppose आपने बहुत बड़ी गलती कर दी in your office, okay? You made a really big mistake and you are very nervous and you say, I'm finished. मतलब क्या हुआ? कि अब तो मैं गया, ये हुआ इसका मतलब कि अब तो मैं गया. हिंदी में क्या होता है? अब तो मैं गया मतलब क्या हुआ? कि कहानी खत्म. I'm in big problem, okay? अब तो मैं गया. बॉस मुझे छोड़ेगा नहीं. अब तो मैं गया. तो in English you say, I'm finished. So I am finished. ये finished भी एक adjective है. We will talk about these things in unit 7, okay? Right now, or maybe in unit 6. We are going to start unit 6 in a couple of days. Okay, so guys, take a look here. Number 1, what's your sentence? Can I have a cheese sandwich, please? Can I have a cheese sandwich, please? Okay, and you could also say, could I have a cheese sandwich, please? No problems. Okay. Now, number 2. Could you post this letter for me, please? Could you post this letter for me, please? Perfect. Can you post this letter for me, please? Could you post this letter for me, please? Suppose you're asking your nephew. You're asking your nephew. आप अपने nephew से बात कर रहे हैं. तो आप क्या पसंद करेंगे?
Can you post this letter for me, please? Or could you post this letter for me, please? Can you? Yeah, that's how it is, okay? You just don't need to worry too much. Number 3. Can you give me your email address? Number 4. email address? Number 4. Can I speak Could you speak to you for a moment? Can I speak to you for a moment? Can I speak to you for a moment? Could I speak to you for a moment? And how do you say this in Hindi? मैं थोड़ी देर के लिए आपसे बात कर सकती हूँ? Yes, exactly. So now, for a moment is a nice expression. अब आप इसको कहीं और भी यूज कर सकते हो ना? Yes, sir. आपको for a moment, I need to, just go to the washroom for a moment, okay, like this. Oh, I need to just look at this message for a moment, okay. So for a moment suggests that it will not take a long time, right? For a moment. Can I speak to you for a moment? Okay. Next. Next. Could you lend me 20 pounds till tomorrow? $20 Or can you lend me 20 pounds till tomorrow? So could you lend me? Okay. So you need some money. So you're requesting someone. Can you lend me 20 pounds till tomorrow? Could you lend me 20 pounds till tomorrow? And when you say till tomorrow, what does it mean? You mean to say that I will pay you back tomorrow. I will pay you back tomorrow. Okay, this is what it means. I don't want you to translate. Problem क्या होती है बच्चों कि हम लोग till tomorrow की हिंदी कर देते हैं सिर्फ, ठीक है? हिंदी करना sometimes confuses the learner. आप अगर ये बोल दे till tomorrow means you are promising that you will pay tomorrow. अब इसको जैसे हिंदी में बोलना है बोल लो. But my meaning क्या है? That you want 20 pounds for today and you are saying you will pay back tomorrow. बोलना कैसे है? Can you lend me 20 pounds till tomorrow? अगर आप कह रहे कि अगले संडे को दे देंगे तो कैसे बोलेंगे? Can you lend me 20 pound till Sunday? Simple and easy. Well done. अगले महीने वापस कर देंगे सैलरी आएगा तो ओके well, Can you lend me 20,000 till next month? Okay. She changed the amount. She said 20,000 now. Okay. I know, sir. No one is going to pound. Yeah. Okay, 20,000. Okay. Till the next month. Okay. Next. Can I give you me a hand with this box? Can you give me a hand with this box? Can you give me a hand with this box? Can you give me a hand with this box? Or could you give me a hand with this box? So it's a polite request. Now listen to the audio and enjoy it, okay? Tape script 5.19. 1. Can I have a cheese sandwich, please? In white or brown bread? 2. Could you post this letter for me, please? Yes, of course. No problem. 3. Can you give me your email address? I think you have it already. 4. Can I speak to you for a moment? Can it wait? I'm a bit busy. 5. Could you lend me £20 till tomorrow? I can lend you 10, but not 20. 6. Can you give me a hand with this box? Of course. Do you want it upstairs? Tape script 5.19. Okay, one more time. 1. Can I have a cheese sandwich, please? Now, okay. When you say, can I have a cheese sandwich, please? The shopkeeper, offers you options. In white or brown bread? In white or brown bread? In white or brown bread? You want your cheese sandwich in white bread or in brown bread? Okay. 2.
Could you post this letter for me, please? Could you post this letter for me, please? Yes, of course. Yes, No of course. problem. No problem. 3. Can you give me your email address? Can you give me your email address? And now listen to the response. I think you have it already. I think you have it already. I think you have it already. I think you already have my email address. I think you have it already. मुझे लगता है आपके पास पहले से है. होगा. Okay? I think you have it already. Sir, can I say, can I get your number, please? Yeah. A lot of times, I just want to address that question. A lot of times, get verb is used to a lot of verbs. खाली यहाँ नहीं मोनी. Get जो है, get is the most common verb in English. Actually, आप किसी के इंग्लिश के कंफर्ट जोन का अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से how often they use the verb get. क्योंकि कई verbs को रिप्लेस कर सकते हैं आप get से. उसको ना बोल के get बोल देंगे. Can I get your phone number? All right, totally, no problems. But remember, it sounds more friendly and casual than can I have your phone number? Okay? Get क्या होता है? Casual होता है दोस्तों. So whenever you use get instead of other verbs, तो आप अपना टोन कैसा चेंज कर रहे हैं? इनफॉर्मल बना रहे हैं. ओके? आप कहते हैं ना, you know, he becomes angry. Okay? The teacher becomes angry. आप कह देते the teacher gets angry. Okay? तो ये भी कैजुअल बना देना है. मतलब बात का टोन जो है थोड़ा फ्रेंडली ज्यादा हो जाता है, थोड़ा इनफॉर्मल ज्यादा हो जाता है. He gets angry. Okay? तो become के जगह भी get use कर सकते हैं. There are so many situations where you can use the verb get. If you look up the word get in the dictionary, you'll find 3-4 pages. 3-4 pages in the dictionary for get. सिर्फ get के लिए, get, get. उसके लिए 3-4 pages. 3-4 पन्ने हैं. इसका मतलब get can be used in so many ways कि अगर आप उसको describe करते हो तो 3-4 पन्ने लग जाते हैं डिक्शनरी के. So it's a 3-letter word, but it has so many uses. Absolutely correct. Don't get me wrong. Okay? तो यहाँ get बोलने का क्या मतलब है? Don't think, don't misunderstand me, right? Don't get me wrong. Okay? Yeah. तो बहुत जगह get को use करते हैं. It's a very, very common verb. Last conversation. 4. Oh no, 4. Okay. Can I speak to you for a moment? Now listen to this one, very interesting. Can I speak to you for a moment? The lady says. Now listen to the response. Can it wait? Can it wait? He says, can it wait? He doesn't say, can you wait? He says, can it wait? Can I speak to you for a moment? Can it wait? Can it wait? आप कभी नहीं बोलते can it wait. आप जरा सीख लीजिए. Why is he saying can it wait? What does he mean? उसने can you wait नहीं बोला. You बोलता तो कहता आप इंतजार करो, right? Can you wait? लेकिन उसने कहा can it wait? So use your common sense and tell me what could be it. It क्या हो सकता है? Conversation. Yes, exactly, Khushi. The matter that she wants to discuss. Okay? The matter that she wants to discuss. Can it wait? उसके बोलने का हिंदी में क्या बोलता है वो? अगर वो बोलता है can it wait, तो हम लोग naturally क्या बोलते हैं हिंदी में वहां पे can it wait की जगह? जरा ना हिंदी में रेनू, हमारी मदर टंग हिंदी है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं इस सिचुएशन में? अगर कोई हमसे बात करना है और हम ये लाइन बोलना चाहते हैं कैन इट वेट, तो हम क्या बोलते हैं हिंदी में? दोस्तों जो मैं सवाल कर रहा हूं ना, इसको थोड़ा ओपन माइंडेड होके सोचो. आखिर एक आदमी है, देयर इज अ मैन and a woman wants to talk to him. Okay, maybe he is the boss or maybe he is the father. और उसने आगे कहा थोड़ा बात करना, can I talk to you for a moment? और उसने कहा can it wait? Most probably ये बॉस ही लग रहा है मुझे, ठीक है ना? तो उसने कहा can it wait? और उसके बाद उसने कहा I'm a bit busy right now. I'm a bit busy at the moment. Okay? मुझे पूछना है कि can it wait की जगह हम लोग क्या बोलते हैं? क्या आपको अपनी हिंदी आती है? ये सिमिलर सिचुएशन इमेजिन करो. यस सर, बोल सकते हैं ना, चलो थोड़ी देर बाद इस बात पे करते हैं. बहुत बढ़िया शबनम, अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा.
और भी कोई बताना चाहेगा? कैन एनीबॉडी एल्स? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंग्लिश सुनो। चीकू चीकू मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि वी कैन हियर पीपल टॉकिंग बिहाइंड यू, अराउंड यू। तो आप काम करो ना, can you find another place to sit when there are no people, and if it is not possible then write your sentence to me, okay? आप थोड़ा लिख दो, ठीक है? नहीं तो जल्दी से बोल लीजिए, we will hear, come on, go ahead। बोल लीजिए, come on चीकू। मैं अभी मीटिंग भी, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करता हूँ। ठीक है, तो आपने अपने तरफ से डिसाइड कर लिया, बाद में बात करते हैं। इस कॉन्वर्सेशन में उसने अपने तरफ से डिसाइड नहीं किया, बाद में बात कर, उसने कहा पूछा है कैन इट वेट, यानी कि डिसीजन किसके हाथ में है अभी भी। अब देखो कैसे आप लोग गलत कंपैरिजन करते हो। आपके सेंटेंस में आपने डिसाइड कर लिया, ठीक है, कि बाद में बात करते हैं, लेकिन इस कॉन्वर्सेशन में उसने खुद डिसीजन नहीं लिया है कि बाद में बात करते हैं। उसने कहा है ये कैन इट वेट, आई एम अ बिट बिजी राइट। हाँ देबा, थोड़ा रुक सकते हो? ठीक है, बढ़िया। और क्या क्या बोलते हो आप लोग अपनी हिंदी में? ये इंपॉर्टेंट है। अब आपके सामने कोई भी, हाँ क्या हम थोड़ी देर बाद इस मैटर पे बात कर सकते हैं? ये मुझे फिल्मों की डायलॉग्स के जैसे लगा कल्पना, ये हिंदी है ही नहीं, ये हिंदी नहीं है। जब आप हिंदी फिल्में देखते हो दोस्त, देन यू हियर डिफरेंट काइंड ऑफ डायलॉग्स, लेकिन जब आप इंग्लिश फिल्म देखोगे ना डब किया हुआ, तो उनके डायलॉग बड़े अजब हो जाते हैं, मतलब वो नेचुरल नहीं लगते, अजीब फनी लगते हैं। तो ये मुझे वैसा लगा कल्पना। तो मैं ये नहीं कहूंगा आप गलत हो, मैं आई कैन ओनली से दिस मच कि हम लोग ऐसा नहीं बोलते। हम लोग क्या बोलते हैं, रुको आप अपने करते अपने हैं, लाइफ से लाओ, अपने लाइफ से। रुको करते हैं, कुछ देर बाद बात करें। हाँ क्या बात है काशिफ, वेल डन। हाँ इसमें सर क्या है, इन आर लैंग्वेज रुको करते हैं। ये तो फिर आपने अग्री कर लिया। उसने उसने कहा कैन इट वेट, आई एम अ बिट बिजी एट द मोमेंट। वो भी सही है, रुको करते हैं, लेकिन फिर आपने डिसाइड कर लिया है, ठीक है ना, और उसके साथ साथ कह दिया कि हाँ थोड़े बिजी है अभी, रुको करते हैं थोड़ी देर बाद, अभी बिजी हैं। तो ये डिसीजन आप ले रहे हो। देखो मैं कितना ज्यादा इन मुद्दों पे ध्यान दे रहा हूं और आप क्यों नहीं दे रहे इन मुद्दों पे ध्यान। फैक्टर्स है ये कि उसने डिसाइड नहीं किया है कि वो बाद में बात करेगा, वो सजेस्ट कर रहा है। उसने कहा कैन इट वेट, आई एम अ बिट बिजी एट द मोमेंट। अभी वुमन क्या क्या बोल सकती है, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं। वुमन बोल सकती है ऑल राइट, ओके, और द वुमन माइट से नो इट इज रियली नेसेसरी, इट इज अर्जेंट, ये भी तो बोल सकती है। तो डिसीजन किसके हाथ में है? वुमेन के पास। हाँ, तो आपकी लाइन ऐसे क्यों नहीं आ रहे जिसमें डिसीजन औरत के हाथ में हो, जो बोल रही है कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट? आप ऐसे क्यों नहीं बोल पा रहे अपनी मदर टंग में? क्या आपके पास हिंदी नहीं रही है आपकी जबान? इज हिंदी नॉट योर नहीं मदर सर, टंग? है बट हम लोग हिंदी में किस वैसे ही टॉपिक पे? बोलते हैं। सर नॉर्मली बोलेंगे, थोड़ा रुकिएगा। अच्छा थोड़ा रुकिएगा, थोड़ा भी बिजी है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा ज़ेबा, ऐसे बोल सकते हैं थोड़ा रुकिएगा, पूछ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा रुकिएगा, थोड़ा भी बिजी है, राइट राइट ज़ेबा? यस सर। अच्छा लगा मुझे। और एक और सुना, मतलब जरूरी बात है क्या ये? कभी तुम लोगों ने नहीं कहा है कभी लाइफ में जरूरी बात है क्या, अभी थोड़ा बिजी है? अब बताओ किसके हाथ में डिसीजन? वुमेन के हाथ में। तो यही तो मैं कह रहा हूं इतनी देर से, जेब आप नेचुरल सही जा रही थी, लेकिन ये कैन इट वेट का मैं सही ट्रांसलेशन दे रहा हूं आपको। जरूरी है, जरूरी बात है क्या? क्योंकि आप जब जरूरी बात है क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं? कैन इट वेट, मतलब अगर ये वेट कर सकता है, ये मुद्दा जो है, बिकॉज खुशी हैज ऑलरेडी टोल्ड यू ये टॉपिक जिस बारे में बात करना है, इट मतलब वो, यानी कैन इट वेट, यानी अगर ये वेट कर सकता है ये टॉपिक, इसका मतलब जरूरी नहीं है, और अगर वेट नहीं कर सकता है तो इसका मतलब जरूरी है। तो अंग्रेजी बोलते समय हमें कंपेयर करना होता अपनी लैंग्वेज से, ट्रांसलेट नहीं, क्योंकि कैन इट वेट का ट्रांसलेशन हो क्या ये इंतजार कर सकता है, राइट? लेकिन हम लोगों ने कभी ये लाइन बोला है किसी को, क्या ये इंतजार कर सकता है? एवर, इवन इन योर ड्रीम्स, नेवर। ड्रंक भी हो जाओगे ना, और कोई आपसे आके बोलोगे, बहुत दारू पी रखी है आपने, फिर भी कोई आपको आके पूछेगा कि थोड़ा बात करना था आपसे, तो आप ये नहीं बोलेंगे क्या ये इंतजार कर सकता है, ये कभी नहीं बोलेंगे आप। तो इसको नहीं सर, कहते हैं, बोलते हैं जरूरी है क्या। हाँ, इसलिए मैंने सबसे आपको नेचुरल हिंदी दी। और आप क्यों नहीं सोच पाए पता है? क्योंकि जरूरी वर्ड के लिए आपके दिमाग में नेसेसरी फिट होया हुआ है। एम आई राइट गाइस? जो कि हम लोग अक्सर यूज करते हैं अपने लाइफ जरूरी में। वर्ड के जैसे हिंदी में आता है, आपके दिमाग में नेसेसरी वर्ड आता है ना दोस्तों? इज इट नेसेसरी? यही प्रॉब्लम है कि वहां जो उसने कहा है
कैन इट वेट, तो उसके आगे बातचीत मैं बताता हूँ. नो इट कांट एक्चुअली. उस औरत ने कहा नो इट कांट एक्चुअली, इट्स वेरी अर्जेंट. ओके, इट्स अबाउट योर वाइफ, इट्स अबाउट योर सन. ओके, तो बात समझ में आ रही है. और ये भी जवाब दे सकती है औरत, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम्स, विल टॉक इन द इवनिंग. तो कैन इट वेट, तो छोटा सा सेंटेंस था 3 वर्ड का, लेकिन समझने के लिए कितना मेहनत लगा आप लोग गौर करो. ना उसकी वोकैबुलरी आपको मुश्किल लगी, ना इसमें कोई मुश्किल वर्ड था कैन इट वेट, ना कोई मुश्किल ग्रामर था, फिर भी आप वहां नहीं पहुंच पाए. पता है ना क्यों? बिकॉज योर प्रॉब्लम, योर वीकनेस इज नॉट वोकैबुलरी, नॉट ग्रामर, एक्सपोजर ऑफ द लैंग्वेज. ओके, और जितना ज्यादा अपने आप को एक्सपोजर दोगे ना, आपका दिमाग उतना ही नेचुरल काम करेगा और आप ऐसे ही हिंदी कर पाएंगे आसानी से. कैन इट वेट मतलब उसने कहा, मतलब जरूरी बात है क्या? अब सोचो इस लिहाज से कैन इट वेट को. कैन द मैटर दैट यू वांट टू डिस्कस विद मी वेट? इट मतलब द मैटर दैट यू वांट टू डिस्कस, द थिंग दैट यू वांट टू टॉक अबाउट. कैन इट वेट यानी बाद में हो सकता है. अब सुनो थोड़ा, इसके बाद अब आगे और एक्सपोजर मिलेगा तो क्या क्या सीख सकते हो. सामने लाइंस आएंगे तुम्हारे. Shabnam said to her daughter, "Beta, come and help me with chopping the onions." Okay. So the girl says, "Mummy, I'm doing my homework." Okay. Then Shabnam says, "Your homework can wait, but guests are coming." Understand? Your homework can wait. Guests are coming. Don't you know? मतलब वही बोले, बाद में होमवर्क नहीं हो सकता है, गेस्ट आ रहे हैं ना. यही हिंदी में बोलते हैं ना. तो ये वेट का ऐसा यूज आपने कभी इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके दिमाग में वेट मतलब इंतजार करना बैठा दिया है. और आप हिंदी में ये लाइन नहीं बोलते कि होमवर्क इंतजार कर सकता है, ऐसा नहीं बोलते. आप बोलते होमवर्क बाद में हो सकता है, बोलते हैं ना. इसीलिए स्पोकन इंग्लिश इज डिफरेंट. यस रेनू, यस रेनू, आपसे कह रही थी कुछ. सर बाद में कर लेना इस वे में. हाँ होमवर्क, हाँ लेकिन वो डिसीजन नहीं ले रहे. होमवर्क बाद में हो सकता है, इट कैन वेट, बाद में कर लेना, होमवर्क बाद में हो सकता है. ठीक है, इट कैन, योर होमवर्क कैन वेट. ओके, तो एनीथिंग कैन वेट. कोई भी बारे में आपको बोलना ये बाद में हो सकता है, आप कैसे बोल सकते हैं? एनीथिंग कैन वेट. या वट एवर इट इज. जैसे मान लो आपने कहा कि अभी हम ये कर रहे हैं, क्या कहते हैं, नहाने जा रहे हैं. ओके, योर बाथ कैन वेट. ऑलराइट, बाद में भी तुम नहा सकते हो. तो आप ऐसे आराम से सेंटेंस बोल सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड. हाँ सर, इफ आई से दैट आई एम वाचिंग सीरियल, योर सीरियल कैन वेट. कांट सर. तो आप आराम से कहेंगे नो इट कांट. तो फिर आपको फिर जवाब मिलेगा, यू कैन वॉच ऑन द रीरन. ओके, यू कैन वॉच ऑन द, यू कैन वॉच द रीरन, यू कैन वॉच द रीरन. रीरन समझते हो ना? या सर, रिपीट. Yeah, the repeat telecast of the same serial. You can watch the rerun. Okay. रीरन सर. Yeah, rerun. You can watch the rerun. Okay. तो ये आपको क्या लगता है, ये यू कैन वॉच द रीरन कि क्या कोई डिक्शनरी से कोई सीखता है ये सारे शब्द? नहीं, इतनी बार डिक्शनरी आप छू नहीं सकेंगे जितने वर्ड्स आपको जानने हैं. ओके, तो आप सिर्फ अपने आप को माहौल दो ना, इंग्लिश सुनने का अपॉर्चुनिटी दो. और वो कौन सी इंग्लिश होनी चाहिए? समथिंग दैट यू रियली एंजॉय. मैंने एक बार एक्सट्रीम पे जाके कह दिया था कुछ कि डजंट मैटर आप क्या सुन रहे हो. ठीक है, उसका नेचर कुछ भी है. मैंने एक बार कहा था इरोटिका भी आप पढ़ रहे हैं, इरोटिका भी सुन रहे हैं, तो ऊपर भी आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी एज लॉन्ग एज यू आर फॉलोइंग द प्रोसेस. मतलब कंटेंट का नेचर मायने नहीं रखता, कंटेंट का क्वालिटी मायने रखता है. सपोज somebody इज इंटरेस्टेड इन इकोनॉमी, तो वो इकोनॉमी की बातें सुनेंगे ना. इफ somebody इज इंटरेस्टेड इन कुकिंग, तो वो कुकिंग के बारे में बातें सुनेंगे ना. somebody इज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, तो वो पॉलिटिक्स की बातें सुनेंगे. तो ऑलवेज लिसन टू समथिंग इन इंग्लिश which interests you. Okay, so don't compromise with the topic, with the interest. जिसमें आपको मजा आता है वो चीज सुनिए और उसी के साथ आप इंग्लिश सीख सकते हैं. You don't have to feel burdened when you are learning English. I want to tell you again, मैंने कोई ऐसी मेहनत नहीं करी इंग्लिश सीखने के लिए. Okay, it's just that I followed my hobbies in English. Sir, Yes, when sir. I try to watch Hollywood movie, Mm-hmm. I Movies. can't get movies. I can't get all the things. You will never get all the things for two reasons. Even I will never understand all the things. Let me explain, Kalpana. All the things when you say, then you are not accepting the fact that we are Indians. We do not know their culture.
so many times they refer to things about their culture which we are unfamiliar with. So those particular things we will not understand. Okay, So I'm चल telling about the language, sir. मैं But बता रहा हूँ लैंग्वेज में ही वो रेफरेंस रहता है कल्चर का, और नहीं समझ में आता। आपके बारे में बात नहीं कर रहा, आपने ऑल द थिंग्स बोला, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऑल द थिंग्स मैं भी नहीं समझ पाऊंगा, बहुत सारे इंडियंस नहीं समझ पाएंगे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। द रीजन इज, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। somebody learned हिंदी, ओके, लिविंग इन जर्मनी, उसकी हिंदी बहुत अच्छी हो गई, और उसने एक दिन एक मूवी देखी, उस मूवी में एक लड़का एक बक्सा उठाते समय बोलता है जय बजरंग बली। अब वो पकड़ा रहा है कि ये क्या, ये कौन सा फ्रेज है, ये तो मैंने कभी सीखा ही नहीं। अब वो कैसे समझेगा कि क्या है, बता मुझे। वो कहेगा मेरी हिंदी खराब है ना। बात समझ में आई? कल्चरल रेफरेंस का क्या मैं कहने का मेरा मतलब था। But sometimes, sir, what did happen with us? अच्छा, तुमने अभी बोला व्हाट डिड हैपन विद अस, सुनीता, होल्ड ऑन टू योर थॉट, अपने थॉट पे रहना, ठीक है, खो मत देना क्या बोलना चाहती थी। दोस्तों, ये क्या होता है कि जब आप ट्रांसलेशन मेथड से सीखते हैं, उसमें दिमाग नहीं लगाते बहुत ज्यादा, तो कुछ बहुत बेसिक बातें नहीं जानते। जैसे डिड आप कब यूज करते हैं सवाल पूछने के लिए ना, जैसे व्हाट डिड यू ईट, yes, sir. यही ना कहना है आपने क्या खाया, कल रात क्या खाया आपने, व्हाट डिड यू ईट Sir, I लास्ट left नाइट। my class But because I'm going out. आगे सुनिए, कितने देर सोए कल रात आप, हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्लीप लास्ट नाइट, राइट, हाउ लॉन्ग डिड यू स्लीप लास्ट नाइट। तो ये सवाल है ना, तो ये जब सवाल नहीं पूछ रही है मुझसे, ये खुद ही बता रही, तो इसमें डिड क्यों कहा, व्हाट डिड हैपन क्यों कहा इन्होंने, What happened to me? क्योंकि इन्होंने ट्रांसलेशन से हिंदी कर इंग्लिश करी है ना। क्या होता है, क्या होता है, तो हालांकि उसमें भी पास्ट टेंस नहीं चाहिए था, व्हाट हैपेंस होना था, राइट सुनीता। तो सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, व्हाट हैपेंस, व्हाट हैपेंस। yeah, Go on. Today I left my class, sir. Please. You left which class? You're leaving now. अभी जा रही हैं आप। Yes, तो sir. अभी I आप left कैसे my class. नहीं, आप हिंदी में कैसे बोलेंगे, जा रही हूं, मैं जा रही हूं सर। तो जा रही हूं को कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, I'm going. आई एम लीविंग, राइट। Yes, तो sir. आई लेफ्ट नहीं बोलना था, क्या बोलना था, सर आई एम लीविंग अर्ली, आई एम लीविंग अर्ली टुडे। नो प्रॉब्लम संयुक्ता मैम, आई विल सी यू टुमारो, Okay. बाय बाय, सी या। Bye. यस सुनीता। But Sunita, ma'am. sir, sometime what happens with us that while whatever you are recording, it's really looks smoothly. We can understand those words because they are speaking really clearly. But in movies, they are speaking frequently. Okay, very good point Sunita, very good point, very good point. Fluently, too fast for your understanding. Yeah, absolutely. There are two things, guys. Okay, in the class, these audio files have been designed to teach you. Okay, these are designed to teach you. ये कोई ऐसी दो लोग बातें नहीं कर रहे दोस्तों। Okay, this is designed to help you learn English. जैसे अगर किसी को हिंदी सिखानी है, तो ऐसे तो बहुत सारी बातचीत हो रही है हिंदी में लोगों के बीच, लेकिन उस ओके इसको कहते हैं ऑथेंटिक मटेरियल, और एक को कहते हैं स्क्रिप्टेड मटेरियल। तो ये स्क्रिप्टेड मटेरियल है, ये ऑथेंटिक मटेरियल नहीं है। ये जो ऑडियो फाइल है, इसको नेचुरल बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये नेचुरल कॉन्वर्सेशन नहीं है एग्जैक्टली लाइफ से उठाई हुई। ओके, पीपल टॉक लाइक दिस, बट ये स्पेशली डिजाइन किया गया एलिमेंट्री लर्नर्स के लिए, जो अभी नीचे हैं लेवल पे, उनके लिए। मेरे इंटरमीडिएट लेवल के ऑडियो फाइल सुनोगे तो वो पल्ले नहीं पड़ेंगे, अभी अभी फिलहाल नहीं पल्ले पड़ेगा। ओके सुनीता, ये भी नहीं पड़ेगा, जो एलिमेंट इंटरमीडिएट क्लास का है वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका लेवल वहां भी नहीं है। तो फिर वो फिल्म जैसी फीलिंग आएगी, जैसे फिल्म में नहीं समझ में आता है, ये भी नहीं समझ में आएगा ऐसा। ये आसान लग रहा है बिकॉज इट इज ईजी, लेकिन हम स्टेप लेंगे, धीरे धीरे ऊपर चलेंगे। ओके, टुगेदर, वर्किंग टुगेदर। तो दोस्तों, इस पे एक बात बता दूं, फिल्मों के बारे में हमेशा तैयार रहना कुछ नहीं समझने के लिए, दैट्स टोटली ऑल राइट, लेकिन सीखने के लिए देखो कि कुछ नया पिक कर लें, और वो भी कॉन्टेक्स्ट से, तो ज्यादा अच्छा। और आप जो जानते हो ऑलरेडी, वो यूज हो रहा है कि नहीं, वो देखो। सबसे ज्यादा रिवीजन के लिए देखना चाहिए, एंटरटेनमेंट करना चाहिए। आपकी हड़बड़ी जो होती है ना, वो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप एक फिल्म देखते हो तो आप सोचते हो मैंने 10-15 वर्ड सीखे तो उसको लिख लेता हूं, क्योंकि आप चाहते जल्दी से सीख जाए।
मत करिए, ये सब फायदा नहीं है। मेरे पास कोई कलेक्शन नहीं है वर्ड्स की, और आप इंडियंस हैं। अगर आप चाइनीज होते तो मैं कहता कि ये सब करो थोड़ा बहुत, बट यू आर इंडियंस, आपके आसपास बहुत इंग्लिश, बस ध्यान देना शुरू कर दो। 2 थिंग्स, क्या क्या 2 चीजों पर ध्यान देना है खुशी? एक, जो आपके सेंटेंसेस हैं वो किस टाइम के बारे में है, ये हर बार सोचो। जितनी बार कोई सेंटेंस सुनो इंग्लिश में, आस्क योरसेल्फ कि ये सेंटेंस पास्ट टाइम के बारे में है, कि प्रेजेंट टाइम के बारे में है, कि फ्यूचर टाइम के बारे में है। क्वेश्चन नंबर, ये पहला क्वेश्चन होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में। सेकंड क्वेश्चन, कि ये जो सेंटेंस बोला गया उसमें जो वर्ड्स हैं उसके फॉर्म क्या क्या है, गौर करो। उसमें ईडी लगा है, आईएनजी लगा है, एस लगा है, क्या क्या लगा है, वो गौर करा करो इन सब चीजों पे। क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स जब टॉलर सुनते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ टॉल एक्नॉलेज होता है, टॉलर नहीं जाता पूरा, वो ईआर को एक्नॉलेज नहीं कर पाते, टॉल को ही एक्नॉलेज करके छोड़ देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो किसी ने कोई सेंटेंस में टॉलर बोला, तो सुनने वाले को सिर्फ टॉल ही सुनाई पड़ता है, सुनाई पड़ते हैं मतलब एक्नॉलेज वो टॉल करता है, वो पूरा फॉर्म टॉलर नहीं कर पाता। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका फोकस कमजोर होता है। तो प्लीज वर्क ऑन दिस, कि जो वर्ड जिस फॉर्म में आपके कान में आया है उस फॉर्म में उसको एक्नॉलेज कर सकते हैं आप। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? एक वर्ड के कई फॉर्म्स होते हैं दोस्तों, लेकिन जब भी आप उनको सुनते हो, आप 3-4 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, आप कुछ किसी में भी सुनोगे, आप उसको सिर्फ बेस फॉर्म में इमेजिन करते हो, एक्नॉलेज करते हो। दिक्कत ये है। तो पे अटेंशन टू द फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स एज वेल। व्हेन विल यू बैक नहीं, व्हेन विल यू, काशिफ आपका सवाल क्या है? व्हेन विल यू बैक, कैन इट स्पीक अदर वे एज वेल? ये पूरे दोनों ही सवाल गलत है। काशिफ हिंदी, हिंदी। सर कोई मुझसे कॉल किया, पूछा कि तुम कब वापस आ रहे? तो व्हेन विल यू बी बैक, हम लोगों ने बात कर ली थी इस पे। बी बैक, जी, व्हेन बट विल यू बी बैक? उसने दो दो बार कुछ बोला, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं 2 बार उसे सॉरी सॉरी किया, फिर वो ये बोला व्हेन विल यू बी बैक। तो इसको कुछ उसने पहले बोला होगा व्हेन आर यू कमिंग बैक, व्हेन आर यू रिपोर्टिंग। नो नो, तो वो क्या बोला वो समझ में नहीं आया। व्हेन विल यू शो अप, व्हेन विल यू टर्न अप? आई थिंक शो अप। हाँ, शो अप इज अ कॉमन एक्सप्रेशन। व्हेन विल यू शो अप, ओके, ये कॉमन है। बिकॉज ही इज अंग्रेज गाइस। या एग्जैक्टली, कॉमन है। तो याद रखना, ये ऑथेंटिक है हो गया। जब आप रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन उठा लेते हो सीखने के लिए, तो वो ऑथेंटिक होता है। ऑथेंटिक मटेरियल कहते हैं हम लोग की जो पढ़ाई होती है ना, टीचर्स की पढ़ाई होती है, उनको ट्रेन किया जाता है कैसे पढ़ाना है ओके, उसमें एक टर्म आता है ऑथेंटिक मटेरियल। तो वी यूज ऑथेंटिक मटेरियल टू। मैं आपके सामने शेयर करता हूँ कभी यूट्यूब वीडियोज, समटाइम्स आई शेयर रील्स विद यू, वो ऑथेंटिक मटेरियल है, लोगों की बातचीत हो रही है। खुशी एंड कल्पना, you guys, and Sunita, you might have listened to that video I shared yesterday, Facebook video or YouTube video, I think last night in the pre-intermediate class I shared one. So that is authentic material, वो real बातचीत है। चलो सुना देता हूँ आपको। okay, authentic material क्या होता है दोस्तों? take a look. authentic material जो पढ़ाई के लिए डिजाइन नहीं की गई है, पढ़ाई के लिए डिजाइन नहीं की गई है, वो जैसे है वैसे है, आप उसको पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं बस, लेकिन वो डिजाइन नहीं किया गया था पढ़ाने के लिए। वेयर इज इट? यस, which okay, just a second people. What's wrong? Can you see something on your screen? Yes. My Facebook page? Well, because one of our listeners actually emailed us and... Hello? Hi, can I speak to Jimmy, please? Hey, can I speak to Jimmy, please? अब देखो स्पीड देखो, can I speak to Jimmy, please? ये है उनके नॉर्मल बात करने का अंदाज। ओके, hey, can I speak to Jimmy, please? हम लोग थोड़ा शुरुआत में स्लो ही प्ले करेंगे इसको, ऑडियो स्पेशली डिजाइन करेंगे लर्नर्स के लिए। Can I speak to Jimmy, please? ऐसे करवाएंगे। लेकिन नॉर्मल बातचीत करने वाले थोड़ी ना आपको सिखाने के लिए बोल रहे हैं। They are just having a conversation. Yeah, this is Jimmy. Yes, this is Jimmy. हाँ, बोल रहे हैं, जिमी बोल रहे हैं। Hey, Jimmy, how are you? This is Jubal from Brook and Jubal in the Morning. Who?
Jubal from Brook and Jubal in the Morning, the radio program. Why's the radio program calling me? Well, because one of our listeners actually emailed us and asked if we could get you on the phone. Her name is Amanda, and you recently... If we can get you on the phone. देखो फिर से get आ गया. If we can get you on the phone. आपसे फोन पे बात करना था. ठीक है, अगर आप इस तरह के ऑडियो ऐसे ऑथेंटिक मटेरियल से इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा हो सकता है. लेकिन इसकी स्टोरी तब आती है दोस्तों जब आप एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच जाओ. इंटरमीडिएट लेवल पे आप होते हो ना तो कम से कम चीजें थोड़ी बेहतर सेंस बनाती हैं. अदरवाइज यू कैन गेट रियली बोर्ड. आप मुझे बताएं, अगर कोई ऐसी चीज आपको पढ़ने या सुनने के लिए दी जाए जो आपको समझ नहीं आ रही हो तो इजंट इट हार्ड? इंटरेस्ट बनाए रखना कितना मुश्किल होता है. So this is why we try and start where people can understand things, okay, so that their interest is maintained. Okay, I'll share that video with you guys as well, this group as well. Watch it later and listen to the whole conversation. You can ask me questions tomorrow about what you listen to. Now let's go back to this audio, 5.19. Can I speak to you for a moment? Can it wait? I'm a bit busy. I'm a bit busy. I'm a bit busy. Now he says I'm a bit busy. A bit मतलब थोड़ा. I'm a bit busy. वो थोड़ा busy है कि बहुत busy है? थोड़ा यही हमारा प्रॉब्लम है. यही प्रॉब्लम है हमारा. हम बस शब्द तक रुक जाते हैं. अगर वो थोड़ा बिजी होता तो बात कर लेता ना. उसने क्यों कहा कैन इट वेट? अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम किसी के घर जाते हो, when you go to somebody's house and they offer you chicken curry और आप कर रहे हो, ठीक है, तो वो पूछता है तीखा हो गया क्या? तो आप क्या बोलते हो? हाँ मिर्चा झोंक दिए हो, ऐसा बोलते हो आप, या बोलते हो हाँ थोड़ा तीखा हो गया? क्या बोलते हो आप? हाँ? क्या बोलते हो आप? हाँ थोड़ा तीखा हो गया. तो आप बोलते हो हाँ थोड़ा तीखा हो गया, तो थोड़ा तीखा तो कंप्लेन क्यों कर रहे हो? खाओ ना बढ़िया से. लेकिन आप बोल रहे हो थोड़ा, आपके कहने का मतलब बहुत तीखा हो गया है. Because it is called a softener. This use of thoda softens your tone. अगर आपने बोल दिया हाँ बहुत तीखा हो गया तो रूड साउंड करेगा कि नहीं? Yes. तो ये सब आप अपनी लैंग्वेज में करते हो, फिर सोचते क्यों नहीं इंग्लिश सीखते समय? आपने कह दिया फट से वो थोड़ा बिजी है क्योंकि अब बिट बोला उसने. अगर थोड़ा बिजी होता तो बात करता कि नहीं करता? पहले ये बताओ. तो लैंग्वेज इमेजिनेशन से सीखा जाता है दोस्तों. थोड़ा में सब छिपा है कि मैं थोड़ा बीट में सब छिपा है कि थोड़ा देर बात करेंगे, मतलब थोड़ा लॉन्ग टाइम. उसमें लगा है कि हाँ बाद में बात करेंगे, और वो काफी बिजी अभी. ही इज वेरी बिजी, राइट? ही इज रिफ्यूजिंग टू टॉक. He is refusing to talk because he is very busy. He is very busy. That's why he's saying a bit later. तो बात समझा करो. सॉफ्टन, इसको कहते हैं सॉफ्टन करना टोन को. ठीक है? आप किसी से बहुत चिढ़े हुए हो, लेकिन आप ऐसे माहौल में नहीं हो जहां पर अपनी पूरी फीलिंग्स बता सकते हो, तो आप बोलते हो ही इज अ लिटिल अनोइंग. आप अ लिटिल क्यों बोलते हैं? आप कभी बोलते हैं ही इज काइंड अनोइंग, आप बोलते हैं ही इज काइंड अनोइंग. अगर आप घर पे रहे ना, मम्मी के सामने या भाई बहन के सामने पूरा गाली गलौज करेंगे कि हाँ ऐसे किया वैसे किया, लेकिन कुछ जगहों पे यू कांट रियली शो योर ऑनेस्ट फीलिंग्स, जेन्युइन फीलिंग्स, तो वहां सॉफ्टनर यूज करते हैं. आप सॉफ्टन करते हैं अपने टोन को, और इसके बहुत तरीके हैं. एक तरीका सीख लो, काइंडा. ओके, सर ना थोड़े गुस्सैल टाइप के हैं. ये आपने ऐसा क्यों बोला गुस्सैल टाइप के हैं? आपने सीधे सीधे क्यों नहीं कहा सर गुस्सैल हैं? क्योंकि आप सॉफ्टन करना चाहते हैं अपने टोन को. तो नेगेटिव बातें बोलते समय वी ऑफन सॉफ्टन आवर टोन. तो आप बोलते हैं सर इज शॉर्ट टेम्पर्ड. ओके, तो ये हो गया डायरेक्ट. लेकिन अगर आपने सॉफ्टन करना है तो आपने लगाना है सर इज काइंडा शॉर्ट टेम्पर्ड. सर इज काइंडा शॉर्ट टेम्पर्ड. तो अब क्या हो रहा है भाई? काइंडा का क्या मतलब हुआ? बस सॉफ्टन किया अपने टोन को. अपने वही बात बोली, थोड़ा हल्के करके बोली, और क्या. राइट गाइस? क्यूट टाइप की, बड़ी क्यूट टाइप की है. अब बताओ यहाँ पर क्या हुआ? बड़ी क्यूट टाइप की है. He's kind of She's kind of cute. She's kind of cute, right? तो kinda, 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 जो कि शॉर्ट फॉर्म है काइंड ऑफ का, काइंड ऑफ. ओके, वो पूरा फ्रेज एक्चुअली काइंड ऑफ है, लेकिन बोलता नहीं है इंसान काइंड ऑफ. सब लोग बोल जाते काइंडा. ओके, तो दोनों ही चीजें सीखनी है. इन द क्लास आई हैव टू टेल यू व्हाट इज द एक्चुअल फ्रेज काइंड ऑफ, and the most people 99% people just say kinda. Okay, all right. तो
जो भी मैं सिखा रहा हूं थोड़ा उस पे प्रैक्टिस चाहिए मुझे। आप घर पे कुछ करेंगे, सेंटेंसेस लिखेंगे। नाउ लेट्स कंटिन्यू। I'm a bit busy. Can it wait? I'm a bit busy. He's being polite, okay? Another person could say, don't you see I'm so busy here? You're bothering me. But that's not polite at all, right? But he is not saying that because he wants to be polite. Can it wait? I'm a bit busy right now. Next. 5. 5. Could you lend me £20 till tomorrow? Could you lend me 20 pounds till tomorrow? तो अगर आप लोगों ने एहसास कर लिया तो एक बात कही जा सकती है, in this class we do not talk about vocabulary and grammar, we talk about language itself. उसमें एक important aspect होता है, language की जान होती है, उसका soul होता है, उस जो इंटोनेशन होता है, जो मतलब होता है। क्योंकि फिर से वही बात कि ज्यादातर क्लासेस में आपने अब तक जो पढ़े, आपके दिमाग में चलता ही नहीं है कि जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं उसके आगे भी सोचना है हमें। इसीलिए आप सब लोग सारे, जबकि आप सब इंटेलिजेंट लोग हो, यू गाइस आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल, बट यू सेड अ बिट मतलब थोड़ा बिजी है, क्योंकि आपने पढ़ा है अ बिट मतलब थोड़ा, बात खत्म हो गई। ऐसे नहीं करो लैंग्वेज में। इफ यू वांट टू लर्न टू स्पीक अ लैंग्वेज, देन गो बियॉन्ड द वर्ड्स, ओके, नॉट जस्ट द लिटरल मीनिंग। I am not intelligent, sir. You said something? What did Chiku say? I couldn't hear him. I am not intelligent, Yes, sir. sir. Can you tell me what he said? Anybody else? Because his voice is not loud enough. Chiku is Chiku is saying, sir, we are not intelligent. Oh, who said that? Who said that? If you were not intelligent, would you be doing what you guys are doing in your lives? Sir, no, sir, he's saying true. Okay, tell me one thing. अगर आप लोग इंटेलिजेंट नहीं होते, if you were, देखना खुशी कुछ याद आ रहा है, if you were not intelligent, would you be doing what you're doing in your life? अगर आप लोग इंटेलिजेंट नहीं होते तो क्या वो कर रहे होते अपने जीवन में जो आप कर रहे हैं? आप सब कुछ कर रहे हैं, राइट? कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, ओके। तो ये सब इंटेलिजेंट लोगों का काम है कि डफर लोगों का काम है जो आप कर रहे हो? स्टूडेंट सर, स्टूडेंट। मैं पूछ रहा हूँ, मेरी बात का जवाब दीजिए। आप लोग बहुत गलत पर्सपेक्टिव रखते हो अपने दिमाग में। क्या आप जो काम कर रहे हो वो कोई डफर कर सकता है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ इंग्लिश नो सीखने के सर, नो सर। अपने जगह एक डफर को रखोगे, वो काम कर देगा वैसे ही जैसे आप कर रहे हो। बाकी सारे काम इंग्लिश छोड़ना, इंग्लिश बोलना छोड़ दो, अदर थिंग्स नो दैट सर, यू डू। नो सुनीता, सर। कर सकती है कोई डफर लड़की आपका काम कर सकती है जो आप करती हैं? नहीं कर सकती ना? Sir, निशात, intelligence has a different level, I guess. And वो बात में आते हैं। पहले एक क्लियर कर लेते हैं कि अपने आप को इंटेलिजेंट ना बोलना सिर्फ इसलिए कि हम इंग्लिश में अच्छे नहीं है या किसी लैंग्वेज में अच्छे नहीं है, इज नॉट अ वेरी गुड एटीट्यूड। आपको समझना होगा, आपकी इमेजिनेशन अच्छी इसलिए नहीं है बिकॉज यू हैव नेवर लर्नड अ लैंग्वेज। You only speak your mother tongue, Yes, which you learned without making any efforts. So those who were guiding you in your childhood, they did not tell you what to think about, you know. yeah. उन्होंने आपको ये बोला ही नहीं कि आपको सोचना क्या है। उन्होंने हर बार बोला ये शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है, ये शब्द है। तो आपको ना एक पैर पे खड़ा होने के लिए सिखा दिया। अगर कोई टीचर इंग्लिश बोले तो आप हिंदी बोल दो, और आप हिंदी बोलो तो टीचर हिंदी बोले तो आप इंग्लिश बोल दो। आप उसके आगे नहीं जाते हैं। इसीलिए वो शब्द जो आसानी से ट्रांसलेट नहीं होते हैं आपको बहुत परेशान करते हैं। Yes, sir. So please use your imagination. There is a situation, there is a conversation in that situation. If the same situation is present in Hindi, what will be that conversation? How will you say those things? एक लड़की आकर बोलती है, थोड़ा बात करना था आपसे 2 मिनट, बहुत जरूरी है क्या? थोड़ा देर बात करें, हम थोड़ा बिजी हैं। तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए वो लाइन कॉन्वर्सेशन सुनते समय कि ऐसी कुछ बातचीत हो रही है। तो यू डोंट नीड योर टीचर टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस, यू कैन डू इट ऑन योर ओन if you just use your imagination, especially in this class. Let's move on to the... I can lend you 10, but not 20. Well, I can lend you 10, but not 20. I can lend you 10, but not 20. Okay. 6.
Can you give me a hand with this box? Can you give me a hand with this box? In number 6, you can, if you want, you can use this verb as well. Can you lend me a hand with this box? Okay. In number 6, instead of give, you can use the word lend as well. Can you lend me a hand with this box? Again, use your imagination. Tell me what the Give me a hand with this. I can lend you 10, but not 20. What is the girl saying? Listen. 6. Can you give me a hand with this box? Can you give me a hand with this box? जितना इन ये सिचुएशन इनैक्ट करने की कोशिश की है, सब लोग समझ गए होंगे क्या कह रही है, क्या Yes. क्या चाहिए. बॉक्स खोल दो ना प्लीज. खोल दो. ओके, चलो ये भी हो सकता है. आगे हेल्प ठीक करो. है. क्या करने में? बॉक्स उठाने के लिए. अच्छा, सुन लो ये अगला लाइन. Of course. Of course. Do you want it upstairs? Do you want it upstairs? Do you want it upstairs? Upstairs मतलब ऊपर ना? Do you want it upstairs? तो अभी भी बोलना चाहती हो खोलने की बात हो रही है? नहीं सर उठाने. नहीं. फर्स्ट लाइन तक था ठीक, बट सेकंड लाइन के बाद वो चेंज हो जाना चाहिए. ओके. Yes, sir. Can you lend me a box with can you lend me a hand with this box? Come on guys, repeat. Can you lend me a box? तो आप सुन लो, हिंदी तो आपको समझ में आ गई है, लेकिन आपको हिंदी थोड़ी बोलना सीखना है, आपको तो इंग्लिश बोलना सीखना है. तो आप में से ज्यादातर का अब फोकस कहाँ होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है, कि आपने समझ ली इसका मतलब. अब बताइए कि फोकस किस वर्ड पे होना चाहिए? वो सारे वर्ड जो हिंदी के हिसाब से मैच नहीं कर रहे. जैसे विद दिस बॉक्स, विद क्यों बोल रही है वो? कोई वजह नहीं है हमारे हिंदी के हिसाब से. विद क्यों बोलेगी भाई? हम लोग हिंदी में बोलेंगे के साथ, इस बक्सा के साथ, ऐसा बोलेंगे क्या? कोई बताए हिंदी जो बोलता है बक्सा के साथ बोलेंगे बक्सा उठाने में मदद करोगे? बक्सा उठाने में मदद करो या ऊपर ले चलो. नहीं सर, ऐसा बोल सकते हैं कि क्या तुम इस बॉक्स तक पहुंचने में मेरी मदद करोगे? हाँ, लेकिन इंग्लिश में क्या बोला शबनम? जैसे बॉक्स का ही ऊंचा रखा है तो जैसे कैन यू गिव मी अ हैंड विद दिस बॉक्स. Okay, so basically if you want some physical help, then you use the expression lend me a hand, give me a hand. Okay, for example, you are cooking in, you are working in the kitchen and you need to do 2-3 things at the same time. Then you ask your family members to come and give you a hand. Okay, but ये सिर्फ physical help के लिए दोस्तों. Okay, when your person will offer you physical help, उठाने में, कुछ काम करने में, not emotional help, not financial help, no, nothing. Okay, so can you give me a hand with this box? Yes, of course. Do you want it upstairs? Okay, so इसका मतलब है क्या तुम चाहती हो हम ऊपर लेके चले जाएं, इसको ऊपर ले जाना चाहती हो? Do you want it upstairs? Okay. तो आपको conversation सुनना है. I'm gonna share the audio file with you guys, and I want you to listen to the conversations many times. And of course, give me a second. Yeah, practice with your partners as well. Okay, after the class, you guys practice with your partners and listen to the conversation and practice them. We will continue tomorrow, right? Okay. Bye-bye, everybody. Thanks for coming to the class. First day after the break. Bye-bye. Bye. 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 Bye, sir. Bye.